So friends, welcome back after the tea break. We are about to begin our session 1 on experiences from ground zero. I humbly and gently request each one of you to kindly take your seat, please. As we settle down, I'll take the time to invite our respected panelists to please come and take their space. I would like to start first of all with Dr. Thomas Isaac, who's a politician and economist. Sir, please kindly come and take your seat. A brief introduction about Sir. Friends, may I kindly request Dr. Thomas Isaac, श्रीमती विभा प्रवीण राव राउत, आपका स्वागत है. कृपया कर आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें. निहारिका सुकृति जी जो बुंदू पंचायत से आई हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें. श्री Ramesha M from Karnataka. I would like to kindly invite Shri Rahmat Ullah from Karnataka again. Shri Rabindranath Beda from West Bengal. So as our panelists settle down, very briefly and very quickly, Ms. Sonali Srivastav, who we just heard a short while ago, is going to be moderating this session. So Sonali, I'm not going to introduce you since, Shikha has already done the same, but a quick round of introductions for our 6 panelists here. I'll start with Dr. Thomas Isaac. As perhaps most of you would be aware, he's an Indian politician and economist who has served as the Minister of Finance and COIR of the Indian state of Kerala. So he's been the Minister of Finance for 2 terms of 5 years each. As a member of the Kerala State Planning Board, he was in charge of People's Planning in Kerala. So he has obtained a PhD from the Center for Development Studies, held various posts, so naturally a very, very gifted individual. Sir, we are really honored and humbled to have you amongst us in the first session. विभा प्रवीण राउत जी का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा. आप सरपंच हैं आरागांव ग्राम पंचायत से. विभा जी, आपका स्वागत है. और आपने जिस ग्रामीण इलाकों से आप आती हैं वहाँ पर चूँकि रोज़गार की कमियाँ थी, शिक्षा की कमियाँ थी, तो आपने जो है और लोगों को भी प्रेरित किया है. आप जो हैं गाँव की तस्वीरों को बदलने के लिए बड़ी पैशनेट हैं, उसको लेकर के उस पर आप काम करती हैं. और आपने स्वयं हमें जानकारी दी है कि जो आपने अभी तक सबसे बड़ी चुनौती, जो चुनौतियां आपने देखी हैं, पानी को लेकर के आपने बड़ी चुनौती देखी है और उस पर आपने काम किया है. आपका स्वागत है यहाँ पर इस मंच पर. हमारे साथ में निहारिका जी भी हैं. निहारिका जी बुंदू पंचायत, जैसा मैंने कहा, झारखंड से आप आई हैं. और एक बड़े गर्व और गौरव की बात हम सभी के लिए कि निहारिका जी जो हैं प्रथम महिला मुखिया हैं बुंदू पंचायत की, जो पेतारबार ब्लॉक है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का. आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जो स्थानीय हमारे जो पंचायतें हैं, जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक बदलाव संभव नहीं है. तो उसी के तहत आप काम करती हैं और आपकी पंचायत सम्मानित भी हुई है. आपने एक प्लान बनाया है, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. आप लोगों ने स्वच्छता शुल्क जो है वहाँ के अपने लोकल हाट बाज़ार से लिया है. तो हम आपको इसके लिए बधाई देते हैं निहारिका जी, और आपका स्वागत समागम के इस पहले सत्र में करते हैं. हमारे अगले पैनलिस्ट श्री रमेश एम, आप जनरल स्टैंडिंग कमेटी मेंबर फ्रॉम नागर मेगरम इन कर्नाटका, ग्राम पंचायत इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वार्ड नंबर 1. तो आपने एक डिजिटल लाइब्रेरी आपने सेट करी है, टेकन मैनी इनिशिएटिव्स, बट बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम आई विल बी लिटिल बिट क्विक. ऑल्सो वर्कड विद कम्युनिटी टू एक्सेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जिसको लेकर पहले बात हुई थी. सर, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू अमंगस्ट अस. थैंक यू. और नेक्स्ट पैनलिस्ट हमारे साथ में रहमत उल्ला जी हैं. आप जीपी मेंबर हैं यालागोडू कर्नाटका से, और आप जो हैं पहली बार आप 2020 यानी 3 वर्ष पूर्व आप चुने गए थे, और आप पूरे प्रयासरत हैं कि जो आपके जो स्थानीय विधायक हैं, आपके स्थानीय सांसद हैं, उनके माध्यम से कैसे आप जो उनकी विधायक निधि है, सांसद निधि है, उसको आप अपने ग्रामीण विकास में किस तरीके के साथ लगा सकते हैं. आप एनोड गवर्नेंस फाउंडेशन के एक पंचायत फैसिलिटेटर की तरह पिछले लगभग 11 महीने से भी आप जुड़े हुए हैं. रहमत जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है.
हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग जो हैं हमारे बीच में यहाँ पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव श्री रविंद्रनाथ बेड़ा, वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम दिगंबरपुर ग्राम पंचायत. आप टैक्स कलेक्टर अपॉइंट हुए थे दिगंबरपुर ग्राम पंचायत के, और आपने अपने आप को उस पंचायत से जोड़ने के बाद में आपने कई जानकारियाँ जो हैं पंचायत की जो उनकी कार्यप्रणाली होती है उसको आपने आत्मसात किया है. 10 वर्ष पूर्व यानी 2013 में आप पहली बार जो थे ग्राम प्रधान का आप चुनाव जीते थे, और उसके बाद से आप जो है कई अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं. तो मैं इन्हीं सभी संक्षिप्त परिचय के साथ में मैं सोनाली को आमंत्रित करना चाहूँगा. एंड वन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर योगेश जी हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़ गए हैं. योगेश जी, आपका भी स्वागत है. You joined us online. Dr. Yogesh Kumar is the Executive Director of Samarthan Center for Development Support, operating in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So I want to, before I hand over to Sonali, one message with a lot of respect and a lot of humility, and I'm going to say this in English and Hindi both. I think we all value our time. So with, as I said, with a lot of gentleness, I think we started at 12:20. So we have, if I'm not mistaken, I think we have 1 hour, right? We have 1 hour. So we have planned 60 minutes for this session. It will be our humble endeavor to conclude everything in 60 minutes. Of course, we all know कि आप लोगों को आप तो बहुत सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है. तो इसके लिए हमने एक छोटी सी व्यवस्था बनाई है. हमारे यहाँ पे एक युवा साथी हैं, मोहिनी, आप एक बारी खड़े हो जाएंगे. तो मोहिनी को एक बहुत ही हमने चुनौतीपूर्ण वो दी है जिम्मेदारी. क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप समय याद दिलाएंगी. तो जब आपका 1 मिनट बचेगा वो आपको बता देंगी. आप लोग जब बोल लेंगे उसके बाद में सर जो है आप लोगों की बात को कंक्लूड कर लेंगे. तो वील फॉलो दिस पैटर्न, ट्राई एंड फॉलो दिस पैटर्न फॉर ऑल सेशंस. इज दैट फाइन विद यू? Is that fine with everyone? All right, Sonali, please. Thank you, Anup. So, my privilege to be in this panel discussion to moderate this. Thank you for introducing all the panelists. We have panelists here from Karnataka, Jharkhand, Madhya Pradesh, West Bengal, Kerala, and I am from Uttar Pradesh. So this is the reality of our country. I don't know how much we can standardize and bring out indexes. So that's the challenge that we have in front of us. The structure that we'll follow today, and also the challenge of language, because Professor Isaac has told me he doesn't understand a word of Hindi, or he doesn't want to, and and the other panelists are not comfortable except in the language that they speak. So we have translators, Lingadevaru and Padma from Anode. They will help us out, and Sarbani from PRADAN, who are sitting with us, and they will just take the mic whenever people are speaking so that they can translate in English. And we have already briefed the panelists. So while I'll speak in English, most of the questions have already been told to the panelists, so we don't need that translation. The structure would be that each panelist, and we'll start with Dr. Yogesh Kumar, who's joined us online from Samarthan, and who is basically going to talk about, Samarthan has been working with panchayats for many years, so he'll talk about the relevance of panchayats in development, and he may share some examples with us, and what kind of sort of effort is required to develop the capacities of panchayats basis his experience. So he will talk about that. We will then move to each panel member, and who will speak for 5 minutes on some of their achievements. It will be nice to hear, because there's a lot of beautiful work which has been done with these panchayats, which we should sort of understand. And I've asked them also to share if they have any expectations from departments, because that is the other big, sort of big need when the panchayats and departments to work together. So I've requested them to think through that and give a response on that. We will end the session with Professor Thomas Isaac talking about
summarizing and whatever else he wishes to, touching upon his very rich Kerala, People's Plan campaign experiences, Kudumbushri, and also the kind of investment that he envisages should be done for panchayats. So I'm going to stop here and I'll hand it over to Yogesh ji from Bhopal. Yeah. धन्यवाद सोनाली जी. My apologies for not being present there. अपारहार कारण की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाया. I'm extremely sorry about this to be present in person. प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, ऑर्गेनाइजर्स को इस अवसर को देने के लिए. ये आवाज़ क्या आ रही है? मुझे आ रही है. आपको क्लियर आ रही है मेरी बात? सुनाई दे रही? Yes, we can hear you. Please go ahead. तो मैं थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करूँगा. माननीय मंच, खासतौर से प्रोफेसर थॉमस आइजैक, उनको सुनना हमेशा ही प्रेरणादायी रहता है. ऑलवेज इंस्पायरिंग एंड सो मेनी पंचायत लीडर्स वर सिटिंग हियर. So briefly, I will try to give some time, as Sonali said, to focus more on relevance of panchayats with some examples. तो मेरा पहला बात में रखना चाहता हूँ कि पंचायत को जब त्रिस्तरीय पंचायत के स्तर पर देखना पड़ेगा. 3-tier structure of panchayat has to be kept in mind because we have on the bottom ग्राम सभाs, they have governance function, उनको अभिशासन का काम दिया गया है, और ग्राम पंचायत को एजेंसी फंक्शन का काम दिया गया है. बहुत सारे काम ग्राम सभाओं में होंगे, ग्राम पंचायतों के माध्यम से करने की बात की गई है. ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे अपने यूनियन एंड स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी है. ग्राम सभाओं को काम करने के लिए, ग्राम पंचायत को काम करने के लिए समितियाँ हैं. देयर आर मेनी कमिटीज, specific committees, they are supposed to support the Gram Sabha and Gram Panchayats undertaking. So it has to be seen in that constellation. And Gram Sabha is nothing but a collection of interest of various stakeholders. However, voters are eligible to be Gram Sabha members, but they bring in various interests. महिलाएं जब बैठती हैं तो वो शिक्षा की बात करती हैं, आंगनवाड़ी की बात करती हैं. पुरुष बैठते हैं तो वो खेती की बात करना चाहते हैं, वहाँ पर सड़क की बात करना चाहते हैं. नवयुवक बैठते हैं तो रोजगार की बात करना चाहते हैं. तो इसलिए अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं. साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें जनपद और जिला के स्तर पर देखना पड़ेगा, बिकॉज दोज टीयर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. द होल हेल्थ सर्विस आर नॉट डिजाइन्ड cater each panchayat. On a cluster of panchayat we have PHCs. Therefore, particularly the services of the revenue department are not particularly for a particular panchayat. Therefore, cluster of panchayats also have to be considered. हमारे फॉरेस्ट के काम, हमारे इरिगेशन के काम, इनके साथ जरूरत है. इसी तरह जिला स्तर पर DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, which is a constitutionally mandated body under the 74th amendment. और मध्य प्रदेश में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको कहते हैं ग्राम जिला सरकार. यहाँ पर सारे फंक्शनरीज को भी पंचायत के अधीन कर दिया गया था कि प्रशासनिक ट्रांसफर्स निर्णय सारे वहाँ पर हो सकें. तो मुझे लगता है कि इस पूरे गैमेट को समझना और देखना बहुत आवश्यक है जब पंचायत की बात. ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग मेरी तरफ से प्रकार से होगी. मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि पंचायतों को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का काम दिया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण काम है, और कोविड-19 के दौरान पूरे राष्ट्र ने महसूस किया जब सरकार वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, गवर्नमेंट फंक्शनरीज वर नॉट able to reach the people to support them because of the lockdown, because of the spread of COVID, social distancing norms that were to be followed. The political leadership of panchayats that was available and providing support to the people. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है
उन समयों में भी जब आपदा है और उन समयों में भी जब लोगों को बेसिक सर्विसेज की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में लगभग 335 क्वारंटाइन सेंटर्स का अध्ययन किया। पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायतों को आदेश था कि वो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए। बहुत सारे प्रवासी वापस आ रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि महिलाओं के रहने की अलग व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वो भी 2 वक्त का खाना मिल रहा है। ये जो सोशल जस्टिस के मुद्दे थे, ये पंचायत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इस अध्ययन से जो निकला, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश की पंचायतों के लिए इस तरह की गाइडलाइंस बनाने को भेजी और उसके अंतर्गत इन सब चीज़ों में बहुत सारी सुविधाएं थी। So one, that because panchayats were present, only present across the rural areas in the state, they were able to reach out to all the migrants in one go when the administration was unable to reach. And second, they were able to improve the situation on ground very quickly. The second was later on labor resource centers were established. We were supporting about 9 labor resource centers, because large number of migrants who had come were without any entitlements. They didn't have the PDS ration entitlement, they didn't have the labor card, Ayushman card. Therefore, it was very important to register them, and therefore panchayats took responsibility of building पलायन पंजी। ये जो सारे माइग्रेंट्स थे उनका उन्होंने पलायन पंजी बनाई। हम लोगों ने लगभग 262 पंचायतों में। Sorry, Yogesh ji, I think you have maybe 30 seconds. Sorry. वो उस तरह के काम हम लोगों ने किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ हम पीएचसी और पंचायतों के बीच के संबंधों को देख सके। जब बहुत सारे हमने देखा कि पेशेंट्स के रजिस्टर्स बने और पीएचसी के साथ बात हुई, पीएचसी की भी प्लानिंग। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पंचायत बहुत दूर है, लेकिन जहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किए वहाँ पर हमने देखा कि पंचायतें और पीएचसी जब करीब आई तो लोगों की सुविधाएं बढ़ गई। अभी लगभग हमने देखा है कि 95% लोग आज पीएचसी की सेवाओं को छत्तीसगढ़ में मिलता है। 4 बात जो मैं कहना चाहूँगा चैलेंजेस और सपोर्ट की तरह से, एक पहला है कि आपने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन इनके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कोई रास्ते नहीं हैं। मध्य प्रदेश में खुला बोर्ड की बात की कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे हटाया जाए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर दिक्कतें आती हैं तो रेगुलेटरी अथॉरिटी की आवश्यकता है, so that they can also go and talk to the administration if they are harassed. So that is going to make them local government, because at the moment they are the lowest rung of the district administration. उसको हमें अगर हटाना है तो हमें सुविधा देनी पड़ेगी। दूसरा, ये जो बॉटम अप प्लानिंग बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये टॉप डाउन ड्रिवन है, और ये टॉप डाउन ड्रिवन आवश्यक है कि राज्यों को फ्रेमवर्क दिया जाए, लेकिन हमारी अपनी तैयारी नहीं है। लोकलाइजेशन की बात हम करते हैं, इतने इंडिकेटर्स की बात करते हैं, गांव के स्तर पर इंडिकेटर्स का मतलब बहुत अलग है, और उन मतलबों को समझाने के लिए एक बड़े टीम की आवश्यकता है जो इनके एक्सपेरिमेंट्स को करे, सिंप्लीफाई करे। एक महिला से हमने पूछा कि आप अपने गांव को कैसा देखना चाहती हैं, उसने कहा हम चकाचक। चकाचक का क्या मतलब था? हरा भरा हो, पानी हो। अब पता नहीं किस इंडिकेटर में ये बात उसकी फिट होगी, लेकिन उसके आधार पर ये पानी की व्यवस्थाएं अगर हो सके तो वो ये चाहती हैं। और तीसरा मेरा जो प्रमुख चुनौती के रूप में है कि पंचायतों के चुनाव के काफ़ी समय बाद तक भी उनके कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, और सिर्फ SIRD के माध्यम से अगर हम सोचेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में पंचायतों का प्रशिक्षण हो सकेगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, SC कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं, तो अलग अलग समस्या है, तो बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी के लोगों को साथ लाना पड़ेगा, तभी इस तरह के फंक्शंस को करेंगे। सोशल जस्टिस के फंक्शंस अभी भी पंचायतों में नहीं हो पा रहे हैं। हमने छतरपुर में प्रयास किए किस तरह से महिलाओं के साथ होने वाले जो डोमेस्टिक वायलेंस है उनके बीच में पंचायतें आ सकें। उन महिलाओं के लिए जो डेजर्टेड है और अपने परिवारों के बाद वापस आ गई है, उनके लिए नेगोशिएशन के रास्ते बने, सेफ्टी ऑडिट्स हो सके। इसलिए बहुत सारी लड़कियां जो बहुत सारी पब्लिक। Sorry, Yogesh ji. I'm afraid I have to. I'm really thankful for providing me this opportunity. I stop here. Thanks a lot. Thank you, and sorry for this, but thanks for your words. Yeah, thank you very much.
So thank you, Yogesh ji. Basically, the importance of panchayats, especially they came through during COVID, is what he pointed out, when nobody else could reach and panchayats could do that work. And he's talking about training not just by SIRDs but by many other organizations. So thank you. पंचायत members के साथ शुरू करेंगे, तो विभा जी आपसे शुरू करें. जो आपके साथ बात हुई है हमारी कि एक दो आपकी उपलब्धि जो आप अचीव किए, और एक दो चीज़ जो आप डिपार्टमेंट के साथ कुछ जानकारी चाहते हैं अपने पंचायत को अच्छे से करने के लिए, इन दोनों के ऊपर आपसे सुनेंगे. और आप बोलोगे और पद्मा आपका ट्रांसलेशन करेंगे. हाँ हाँ जी, प्लीज़. हमारा नाम है विभा प्रवीण राउत. मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट को माझं आव्हान होतं की माझ्या पिपरी गावामध्ये आप पूरा बोल लीजिए, बाद में वो ट्रांसलेट करेंगे. आप कंटिन्यू करिए. हाँ, हम कुछ कुछ समझेंगे, आप डोंट वरी. माझं आव्हान होतं माझ्या म्हणजे गावाचं का आम्हाला पाणी म्हणजे गावामध्ये पाण्याची उपलब्ध होतीच नाही तिथे. त्यांनी म्हणजे अविश्वास आणायचं काम केलं होतं, म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणूक करायचीच नाही बा असं त्यांचं आव्हान होतं. मग मी त्यांना म्हटले का बा मला तुम्ही वोट द्या आणि मला निवडून द्या. आणि मग मी म्हटलं, त्यांनी मला म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं निवडणुकीमध्ये साथ दिला आणि मी त्यांना भरभरून म्हणजे पाण्याची व्यवस्था जलजीवन मिशनमधून छान विहिरीला पाणी वगैरे लागलं. गावामध्ये पण पाण्याची व्यवस्था खूप छान झाली. घरोघरी नळाचं पाणी सगळं चांगल्या पद्धतीनं गेलं. माझ्या ग्रामपंचायतीमध्ये खूप चांगली व्यवस्था आहे. पूर्ण म्हणजे स्वच्छतेचं पण छान हे आहे. मंदिर डेव्हलप आहे तुम्हारा मैडम. नहीं तो आपको तो सबको समझाना है. यू वांट टू टेक अ क्विक ब्रेक एंड ट्रांसलेट, देन शी विल कम बैक. हाँ, yeah, you are. So Vibhaji is saying that how she got elected. I think it's first, I mean, appreciating I think the way she got elected. She did a lot of work and her husband in the village for a temple, and looking at that, people actually thought if she can do such work for this temple on her own will, if she becomes a sarpanch, she will do the better job of taking care of their village and providing those services. So that is how I think she has actually become the sarpanch. And she's, after that, I think they have actually put demands on water and lot of other demands. She said if she gets elected, and she will fulfill all the demands whatever I think citizens have asked. And that is where I think she was talking about how she actually helped the panchayat. I mean, in the village with Jal Jeevan mission and some other mission, they have actually were able to provide the water facility to all the households. And I think she also mentioned, I think she might have missed about digging a well, and then how that connected the pipelines to all the village, all the households in the village, and that water and clean water, also sanitation was also provided in the village. And this is what I think so far. It would appear I am the only person who do not follow Hindi. Therefore, simplest way would be to give me a note here. And others do follow Hindi, so why do you want to? Marathi, Kannada, there. Sir, I think there is Kannada that we also don't understand, so somebody has to do that. There is Bengali, Kannada, that's what I said, there are 5 languages here. Okay, Vibhaji, continue. The work that you've done for कैसे आप घर का पानी household water supply कैसे किया और funds कहाँ से आया? जिला परिषद को. जिला से funds आया और उसमें कुछ चुनौती हुआ क्या आपको? नहीं तो चुनौती नहीं हुआ. Good, very good. और आपका दूसरा, आप हेल्दी विलेज के बारे में बात करेंगे. स्वस्थ विलेज. मी बताई तुम्ही मराठीत सांगा. आरोग्य दवाखान्याचं. हां, दवाखान्याचं काम आमच्याकडे दवाखाना नव्हता. मी ट्रांसलेट. हां, I think I'll just talk. So she's a fantastic sarpanch. I mean, it's sad that in front of this audience she's feeling a bit shy. But yeah, so I guess we have the notes. So
पद्मा आपके बोलेंगे. Yeah. So I think I'll elaborate. I mean, Yeah. she spoke to me, so I'll just elaborate Sure, on the work. sure. So I think she also mentioned about health. I think how the work has been done on the health. She has actually, there was no PHC center. There was no healthcare facility in the village and the panchayat. So she actually, after becoming the sarpanch, ensured that healthcare has reached to the her village and all the villages. So that access to healthcare has been done very nicely from beginning. I think construction of the center from there onwards. So Okay. that is on the health. I think you were asking which sector. Sure. So in the water, I think also she said that funds. On the challenges also she mentioned, which I think I have not mentioned here, that the challenge, she said that it is difficult to coordinate with the different tiers. So she had to meet the different departments or whichever department, for example, water. So from block to all the departments, multiple number of visits as well as letters have been written with the support of secretary. So that kind of efforts that have been put into ensure. So that kind of a challenge, she said that it's back and forth of going in person for everything and anything. They have to request. Okay. Thank you, Padma. We will move to Rabindra ji. Thank you, Vibhaji. Thank you so much. Rabindra ji, Sukanto is here, translator. Sorry, Sarbani is doing the translation. Hanji, please. नमस्ते, मैं रविंद्रनाथ बेरा हूँ. मैं वाइस सरपंच ऑफ दिगंबरपुर ग्राम पंचायत फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो मेरा ग्राम पंचायत सुंदरबन जो डेल्टा है ना, उसका साउथ पोर्शन में लोकेटेड होता है. तो इसीलिए वहाँ पे हर ईयर नेचुरल कैलामिटी होता है, तो साइक्लोन एंड फ्लड भी होता है. इसीलिए उसी का जो लाइफ होता है पब्लिक का बहुत ट्रबल्स में चल रहता है. मैं कुछ हिंदी और इंग्लिश में बोल सकता, तो ठीक है. नहीं, बांग्ला तो पहले ट्रांसलेट करते हवे, नहीं वो डिस्टर्ब होगा. तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बताने के लिए. तो मैं 2003 से पंचायत में आया, अभी तक भी है. एक टाइम पहले टाइम था 5 years ऑपोजिशन लीडर, देन उप प्रधान, देन प्रधान, देन उप प्रधान, देन अभी भी जो टर्म है 2 साल पहले हम लोग फिर भी उप प्रधान बना. तो इसीलिए उसका पहले हम लोग पंचायत के साथ जोड़ा था. तो पहले आप लोग सुना कि मेरा इंट्रोडक्शन जब हुआ था, जो मैं उसी पंचायत का टैक्स कलेक्टर था. तो इसीलिए पंचायत के जो धारणा है ये गंभीर था. तो मैं देखा जब पंचायत में आया, वहाँ पे अच्छा तरह से पानी का जो जुगाड़ नहीं था, सैनिटेशन व्यवस्था अच्छा नहीं था. तो इसीलिए जो सुस्वास्थ्य का व्यवस्था वहाँ पे नहीं था. तो वहाँ पे जो आदमी लोग सब बाहर में पॉटी करता है, तो पॉटी बाहर में होता है तो वाटर कंटामिनेटेड होता है. तो मेरा लक्ष्य क्या है, ये ग्राम पंचायत के मॉडल बनाना. तो मॉडल बनाने के लिए क्या सूचक है, पहले हम लोग जो एकादश तफसील में 11 शेड्यूल में जो 29 वर्क्स था, वही काम करता था, वही पढ़ के किताब पढ़ के. तो लेकिन बाद में तो SDG आया, 17 गोल्स, मिलेनियम गोल था. तो बाद में SDG जब आया 17 गोल्स, तो हम लोग कोशिश किया कि वो गोल पर जाने के लिए जो काम करना है, पॉवर्टी रिडक्शन, नो हंगर, हेल्थी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली, हम लोग कोशिश किया. तो लेकिन बाद में जब थीम 9 थीम आया, तो ये मैं सीखा कि थीम का साथ SDG कैसे लोकलाइजेशन करना है. तो यहाँ पे मैं सोचा कि जी होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए जो पहले प्रयोजन है वो सुस्वास्थ्य चाहिए. सुस्वास्थ्य वही मिलेगा जहाँ का पानी कंटामिनेट नहीं, जहाँ का सैनिटेशन जो अरेंजमेंट वो अच्छा है. नहीं तो बुखार होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होता है, जब बुखार होता है, डायरिया, कलेरिया एक्सेट्रा होता है, तो उसी टाइम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, स्कूल छूट, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ये बढ़ जाता है. ये जब बढ़ जाता है तो मैंडेज लॉस होता है, स्कूल डेज लॉस होता है.
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी से नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग एम्फेसाइज किया कि वाटर एंड सैनिटेशन थीम 4 एंड थीम 5 के ऊपर जोर दिया हम लोग। तो देखा कि वहाँ पे सफिशिएंट पीने का पानी नहीं, अरेंजमेंट नहीं था। जो कुछ मेरा टाइम कितना है? कितना? 1 मिनट। 1 मिनट मोर कैसे होगा? तो कम्युनिटी टॉयलेट नहीं था, हर घर पे टॉयलेट नहीं था। हम लोग पहले वार्ड लेवल कमिटी बनाया, देन जीपी लेवल भी कमिटी बनाया। हम लोग टास्क फोर्स किया, पंचायत जो इलेक्टेड मेंबर, ऑफिशियल्स, एनजीओ, सीवीओज और सब जो बढ़िया पावरफुल एसएचजी ग्रुप। मेरा ग्राम पंचायत में 500 एसएचजी ग्रुप है, मिनिमम 6000 फैमिली उसका साथ जुड़ा है। इसी उसके लिए हम लोग कोशिश किया कि कैसे वाटर, सफिशिएंट वाटर मिलेगा, कैसे अच्छा तरह से सैनिटेशन अरेंजमेंट होगा। इसीलिए हम लोग जो ग्राम सभा, ग्राम संसद का जो रेजुलेशन है उसी माफिक हम लोग एक कंडीशन दिया, 1 हैंड पंप वहीं पर इंस्टॉल होगा जहां पे एक आदमी जो बेनिफिशियरी है, वाटर लेने वाला जो बेनिफिशियरी है और उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो पार्टिसिपेशन रहेगा। तो हर हैंड पंप में एक वाटसन कमेटी बनाया। वो वाटसन कमेटी टैरिफ कलेक्शन करके होल ईयर फंक्शनल रखता है। तो एक वाटर टैंक हम लोग बनाया, वो भी एक एनजीओस, ग्राम पंचायत और बेनिफिशियरीज कोलैबोरेशन में किया। पंचायत से कुछ नहीं पैसा दिया अभी तक। वह बेनिफिशियरी जो है वो पर मंथ 50 रुपीस टैरिफ देता है। इसे डोर टू सप्लाई हो रहा है, मीटरिंग सिस्टम में पानी सप्लाई हो रहा है। और इसीलिए जो पहले पॉन्ड का पानी लोग पीता है, वो पॉन्ड का पानी के सुजोगर नहीं है, तो कॉन्टामिनेट नहीं हो रहा है पानी। तो हर घर में टॉयलेट बना दिया, हर घर में हम लोग जो स्वास्थ्य विधि के लिए जो अवेयरनेस वो भी क्रिएट किया। तो हर स्कूल में हम लोग टॉयलेट फैसिलिटी नहीं था, सेपरेट टॉयलेट नहीं था। जो एडोलेशन गार्ड के लिए जो मिनिस्ट्रियल प्रॉब्लम था उसी टाइम जो उसका नैपकिन डिस्पोजल करने के यूज करने का चांस नहीं था। हम लोग हर स्कूल में रनिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज एंड वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कर दिया, डिस्पोजल मशीन भी इंस्टॉल कर दिया। इसीलिए जो हेल्थ हैजार्ड जो था अभी वो नहीं है। अभी हम लोग ये बोल सकता कि तो मेरा ग्राम पंचायत वाटर सफिशिएंट ग्राम पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन ग्राम पंचायत। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम चालू किया। रविंद्र जी, वी विल हैव टू, आपका सुनेंगे बाद में, क्योंकि अभी वो 2 बार मेरे को टाइम दिखा दिया। ठीक है, तो आई एम ग्रेटफुल टू प्रधान टू चांस मी हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I just want to say one thing. It's beautiful the way Ravindra ji talked about how they chose the theme 4 and theme 5. They said there was open defecation led to water and contamination, which led to health hazards, which led to dropouts, and therefore man days lost, school days lost, and therefore theme 4 and theme 5. So the way the whole thing was structured, I think was very, very good. Thank you so much. Thank you. Sorry? Yeah. Niharika, आप बोलेंगे। मेरा नाम निहारिका सुकृति है और मैं झारखंड के बोकारो ज़िले से आई हूँ। और हमारे पंचायत का नाम है बुंडू, जो कि पेटरवार ब्लॉक में है। मैं पंचायती राज से मात्र 17 महीने मतलब 17 मंथ से जुड़ी हूँ। हमारे आने के पहले पंचायत में नाली नहीं था। जितना भी कचरा था, लिक्विड कचरा, वो सारा रोड पर बहता था। और अभी जो है वो जब से जीपीडीपी का है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज का है, तब से हमारे जीपीडीपी में महिला सभा द्वारा, बाल सभा द्वारा, नाडेप, सॉकपीट ऐसी योजनाएं आने लगी। क्योंकि जब हमारा गांव स्वच्छ नहीं रहेगा तो बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए विभिन्न तरह से
लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का हमने किया, जिसमें अलग अलग जगह पर नाडेप बनवाया, सॉकपिट बनवाए, और अभी जो है हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे पंचायत में ब्लॉक लेवल पर प्लास्टिक सेग्रीगेशन सेंटर भी बन रहा है, जो ऑन गोइंग है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे सांसद, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिरिडीह लोकसभा के, उन्होंने हमें एक व्हीकल्स दिया है जो कि कचरा उठाने के लिए है। और हमारे पंचायत में अपना स्वर्जित आय, मतलब ऑन सोर्स रेवेन्यू है, जो कि मंथली लगभग 2 लाख होता है। और वहाँ पर गागी हाट लगता है, हाट बाजार लगता है, जो 30 to 40 रेडियस किलोमीटर से लगभग लोग आते हैं वहाँ पर। और वहाँ हमने ऑन सोर्स रेवेन्यू से टोटल 18 to 19 लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें महिला की संख्या ज़्यादा है और 11 सफाई कर्मी हैं जो कि महिला हैं। और अभी जो हमारा है वो हम लोग बाल सभा के द्वारा आया हुआ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर, उसके लिए हम लोग MHM लैब बना रहे हैं स्कूल में। और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमारे बढ़ते कदम पर क्लीन विलेज के लिए हमारे सांसद और विधायक MLAs जो होते हैं वो हमें डस्टबिन प्रदान किए हैं, जिससे अपने गांव को स्वच्छ रखने में हमें बहुत ही मदद मिलती है। GPDP में शौचालय का, जो कि पुरुष और महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसका निर्माण कराया गया है। जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि गांव जो कि बहुत ही नीचे स्तर पर आता है, वहाँ के लोग जिला या ब्लॉक नहीं जा पाते थे, तो उसके लिए हमारा पंचायत जो है वो एक बहुत ही सशक्त निकाय है। और वहाँ पर हमारे आने के बाद में बहुत सी महिलाएं जो, क्योंकि महिला प्रधान होने से बहुत लोगों की समस्या का समाधान वहीं पर हो जाता है। और महिला लोग जो है वो खुलकर पुरुष लोगों से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन हमारे आने के बाद में हर तरह के जितने भी सस्टेनेबल गोल हैं उससे रिलेटेड जितना भी समस्या आता है उसका समाधान हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। Thank you, Niharika. Very good. I will do the translation in English. Basically, she talked about how local government is important because the distance to block is quite substantive. And also women and men would not talk, but when she's become the Sarpanch, that is something that she has been actually overcoming. And she has conversations with on various issues with the men of the village also. She talked about her initiatives on liquid, basically constructing drains, again related to health and health contamination and health hazards. So liquid and solid waste management issues they worked on, construction of drains and soak pits. They are doing the waste segregation at the household and the panchayat level. There's a block at the block level with the grant from the MP LAD. They have constructed a block level plastic segregation center. So the segregated waste goes to the block thing. Then they have a HART, basically a local market, which through which they generate a lot of revenue. She's talking about 2 lakhs rupees per year, and basis that revenue they are able to also pay people for the cleaning staff, so safai karmchari as she called them. So they are able to basically manage their revenues with payment for cleanliness of their village. They have actively used the funds from the MP and the MLA. The MLA has given them dustbin segregation units, etc. So on the whole, what the panchayat is doing is leveraging a lot of resources from various sources and not just the funds that they receive. Thank you so much, Niharika. Thank you very much. रहमत आपसे बात करेंगे। आप हिंदी में नहीं तो हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि फिर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ब्रीफली बता देंगे। हम रामतुल्ला कर्नाटक से, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट अड़ीगोलरहल्ली एड़गोड़ ग्राम पंचायत से। मैं हिंदी में बोलेगा।
हमारे पंचायती से अंगनवाड़ी का लिए फर्स्ट मैं इसमें पंचायती में गया स्टम्प अंगनवाड़ी हमारा बहुत इसमें आता वो अंगनवाड़ी का खेलने का सामान फिर इसका सामान पेंटिंग्स पूरा खेलने के वो से डेवलप करा है। वो भी 15 फाइनेंस में 10 अंगनवाड़ी है, पूरा अंगनवाड़ी एक ही बार करा है। नेक्स्ट में वो हमारा 15 फाइनेंस में 25% SC/ST समुदाय के लिए फिक्सेड रखा था। उसमें हायर एजुकेशन के लिए पैसे हायर एजुकेशन कौन जा रहे हैं उनको भी दिया है। बाद अंत्य संस्कार SC/ST लोग अंत्य संस्कार को भी दिया पैसे हमारे तरफ से। फर्स्ट टाइम वो हमारे पंचायत में हमें गए स्टम्प ऐसा भी दिया सकते हैं कर को बोल को हमें दिलाया वो मीटिंग में पास कर को। फिर उस मैरिज ये SC/ST समुदाय पूरा गरीब लोग थे, मैरिज के लिए भी उसमें पैसे दिलाए 5000 एक मैरिज के लिए। वो फिर कॉलेज हमारा स्कूल्स पूरा पेंटिंग्स करा के अच्छा क्या है तो स्कूल को लोग विद्यार्थी लोग पढ़ने आना है करके अच्छा पेंटिंग्स करा के उसे अच्छा डेवलप करा है। बाद ये हमारे ये सब भी करना है कहे तो हमारे पंचायती में अच्छा एक महीना पहले हमें अनवर्ड फाउंडेशन के जोड़ में मिल के 1 साल हो गया। उससे भी पहले में 3 महीने 2 महीने एक मंथली ये मीटिंग चल रहा था। अनवर्ड फाउंडेशन के जोड़ में मिले महीना मीटिंग करने के लिए हमें बातचीत करे वैसा ही करे। वो उसमें मतलब स्टैंडिंग कम्युनिटी बना है। वो हमने स्टैंडिंग कम्युनिटी क्या मालूम नहीं फर्स्ट में 12 स्टम्प वो स्टैंडिंग कम्युनिटी के उसमें हमारे पूरे 15 लोग मेंबर्स पूरा मिल के बातचीत करके पूरा हम क्या बजट के ऊपर हमारा 15 फाइनेंस बजट कितना आता हमें क्या कितना रखना प्लानिंग कर रहे थे वो बजट के ऊपर प्लानिंग करके ये सभी करे। फिर अब एक हमना ये क्या चैलेंजेस क्या है कि तो एक 6 महीने के सामने हमारा स्टेट गवर्नमेंट आ गया। स्टेट नवा गवर्नमेंट आके उसमें स्कीम्स बल्ला के अलग अलग स्कीम्स दिए। वो स्कीम्स में हमने बराबर माहिती भी कहे तो कुछ भी मालूम नहीं। वो स्कीम्स क्या है फर्स्ट हमें हमारे MLA होंगे MP होंगे कौन भी नहीं मिलता है हमारे वार्ड में पंचायत में फर्स्ट मिलता है नंबर। वो स्कीम्स करे सो स्टेट गवर्नमेंट वाले थे फर्स्ट हमना गालियाँ देते उनको स्कीम नहीं मिला कहे तो तुम्हें क्या कर रहे हैं मुझे स्कीम नहीं आया। फर्स्ट बोल हमना हमारे सामने आने का पंचायती के सामने आने का हमना का क्या है तो गालियाँ देने का बोलने का कर रहे थे। वो भी हमना चैलेंजेस कहे तो वो 6-7 महीने से वो बड़ा चैलेंज कहे तो उनका स्कीम मिलने के लिए आधार कार्ड पासबुक इसमें नेम चेंज होता था। वो ऐसी स्कीम नहीं आ रहा। अभी तो अभी 20% नई स्कीम मिल रहा है। नवा स्कीम में हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट करे सो अभी नहीं आ रहा। वो खाली वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करते आ रहे हैं पंचायती से। लोग आते हमारे हमना भी गालियाँ देते हैं हमें नहीं करे वो स्कीम बोले तब हम नहीं चुकता मिलने का लोगों मिलने का हमें नंबर्स वार्ड में पंचायती में फर्स्ट हमना गालियाँ देते वो सभी सॉल्व करना हमना वो एक बड़ा चैलेंज हुआ 6 महीने से वो स्कीम के बारे में लेने। अभी हमना काम करने के लिए कहे तो हम गवर्नमेंट से और 29 इलाके से हमना कुछ भी नहीं ये माहिती क्या भी नहीं देते हैं। क्या है तो काम इतना करना ऐसा स्कीम आया वो ठीक से नहीं बताते हैं। हमारे जुड़ को मिलके क्या भी एक स्टार्टिंग आज से हम नंबर हो के 1 महीने में हमें वो उसके बारे में मीटिंग कहता है ट्रेनिंग क्या तभी दिए तो अभी अच्छा काम कर सकते हैं कर बोलते हैं। इलाके से पूरा क्या जानकारी आया ना हमना ठीक से दिए तो अभी अच्छा काम कर सकते हैं। हमने भी क्या भी मालूम आता नहीं वो क्या कि हमें आना कर को नहीं है इसमें आ गए स्टम्प ये सब भी देख लेगा तो बड़ा है सीखने का बड़ा है। अभी कितना करे तो भी हमारा अंगनवाड़ी को अभी कर रहे हैं करे तो अभी लोग पूछते रहते हैं अभी वाटर फिल्टर दलक दो वो अभी कितना करे तो भी कितना प्लान करे तो भी अभी चलते रहता है कि ये कभी कुछ ये नहीं होता है प्लानिंग में काम करते करते आता रहता है। वो तरफ से हमना अभी ये सब भी ठीक से करना है तो हमना जानकारी बल्ला इलाके से पूरा करेक्ट जानकारी मिले तो ये हमें एक सक्सेसफुल हमारा ग्राम पंचायती बनाने में कोशिश कर सकते हैं करके मैं बोलने के। थैंक यू रेमत।
और ऑल्सो आप बिल्कुल एग्जैक्टली 5 मिनट बोले, उसके लिए भी थैंक यू. हाँ, तो वेरी क्विकली बेसिकली टॉक्ड अ लॉट अबाउट certain things about institutions. So the panchayat would not meet very regularly. So the members have actually managed to do that. Incidentally, this entire district, 80% members are new. So they're first timers. So a need for training is that much more. And so he talked about need for information on the 29 subjects. And he said when the state government changed, as from Karnataka, new schemes came. But to avail those new schemes, there are a lot of other documentation required, which they did not have knowledge about. And they would then get pressure from citizens, because the campaign talked about all the schemes and then the panchayat had to deliver, but panchayat had no information on those. So he says a lot of pressure comes on the panchayat members. And yeah, he talked about other achievements on basically utilization of the SC/ST funds and on higher education for children, marriage support, paintings, etc. So thank you so much, Rehmat. Huh? What is the priority? No, there was, he talked about different, he did not talk about any localized SDG. So he's talking about basically working with the SC/STs. He's talked more about their challenges, because he's just elected like last 2 years, and he did not speak about any specific priority that he worked on. Ramesh from Nagaram Gire. Ellargo namaskara. First of all attending dignitaries to namaskaram. I am M. Ramesh, second time contesting elected representative from Nagaram Gire village, Chalakere block, Chitradurga district, Karnataka state. Social security pension na ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮನೇಶ್ವಿನಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 80ರಿಂದ 80 to 100 ಪೀಪಲ್ಸ್ above 60 years above pension holders are enrolled and orders copy with issued persons, entire Grama Panchayati ward elected representative under. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ RO ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ RO ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು 8 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ 7 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. 7 ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. RO ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದ ಕುಡಿದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ RO ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ RO ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೈಬ್ರರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಫಂಡ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 4 ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲಿ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ 5806 ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5806 small stories books is also present in a digital library, and also 3 daily newspapers, 4 monthly magazines available in our Gram Panchayat, and also brain lipi, handicapped persons brain lipi is also available in our library, and also learners, readers oriented purpose, RO small water purifications installed in our library. Anganwadis and schools also are developed with well, and also students drinking water purpose RO installed in our entire village schools and Anganwadi. Writing wall writings and paintings in Anganwadi and schools. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಿದ್ದು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 3 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ MP MLA ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ಫಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು CSR ಕಂಪ್ನಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು CSR ಫಂಡ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇವಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ BPL ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಹ ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 25 to 30 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ PM ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ರೈತರಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ರೋ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲಿ 6,000 ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ರೈತರಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. NREG ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಡರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನಗಳನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು NREG ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ SBM ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ODF ಪ್ಲಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 75% ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ 7 ವಿಲೇಜಸ್ individual families construct the toilets. Remaining 25% family waters is there our under Grama Panchayat. These are the achievements of my Gram Panchayat, and also thankful to PRADAN, CI Foundations, Anode Governance, and also Axis Bank. Thank you very much. Thank you, Ramesh. Lingadevaru, I think if I could request you to shortly summarize. I will going to summarize the whatever Ramesh said. Yes, please. Yeah. So 3-4 major points he has mentioned. One is ensuring the social security schemes that should reach to beneficiary. So generally people are access to social security scheme is Panchayat, but whoever is facing challenges, he came into contact, and almost 80 to 100 people are reached through his intervention. That is the one. And second one is RO plant. So he is coming from the Challakere block, which is the lowest rainfall receiving district in our state actually. So because of that, most of the borewells are contaminated by nitrates, chlorides and other chemicals. So so because of that, 8 RO plants are installed on priority by the state government, and then RWS, Rural Water Scheme Department, and then it is handed over to Gram Panchayat. So Gram Panchayat is maintaining that, and continuously the Panchayat is taking care of the RO plants to ensure safe drinking water should reach to community. So that is the one. And second one, under NREGA, so they are ensured the facility of availability of cemetery to all the villages throughout the Panchayat. So 7 villages are reached. Under NREGA, they have made basic facilities should be available at cemetery. So that is the one. And second one, through convergence, Anganwadis and education schools are developed through wall paintings and play materials and other things. And one more important work he has mentioned is digital library. So in Karnataka, government has established the digital libraries throughout the state, and then they are handed over those digital libraries to Gram Panchayat. So after taking handover to digital libraries, so in this Panchayat, they have used OSR, own source revenue funds for maintenance. They have provided 4 Android tablets and free Wi-Fi. So which is accessible to students and other adults. That is the one. And that digital library has 5,806 books, which are reading books, and also few books are available under Braille, literature. So that is the one. And second one, he and his colleagues, other Gram Panchayat members, have enrolled more than 1,000 members, including students. So they have made membership to those libraries, and also they have a membership card so that they can access the books and other Wi-Fi, tablets access. So that is the one. And recently they have showcased one career guidance chart in digital library, which is very useful for the adults, students, and who are doing higher studies. So thank you so much. Yeah. Thank you, Devaru. Thanks. So without losing any more time, and thank you so much to all the panelists or the elected members here, because I know it was a bit chaotic because of translations, etc. But these are stories from villages and people, what they have worked on, and
while we hear them in 5 minutes, a lot of effort which goes on, and it was nice to hear them. I'm going to invite Professor Isaac, Thomas Isaac, to please. How many minutes? 7 minutes. She said 7. You can take 8. No. When it's time, just raise the card. So we have had very interesting 5 presentations. Some of them best practice, I am sure, which gives very important insights to the way the prioritization is being made at the local level and the challenges that some of the Gram Panchayats are facing for this prioritization. Now you have a friend from Maharashtra who has chosen to focus upon drinking water. Then you have sanitation, 2 cases, and Karnataka, education, library, and so on. Fine. I want to ask them one simple question, but I am not going to make them answer that. How did they prioritize this? How did they reach this conclusion that this was their priority? It was not on the basis of any index or the relative ranking vis-a-vis the nation, state, or other panchayats. It's the felt need. For us outsider, you need the data. You need all this thing. But beauty of local level planning is, okay, you need data, but a minimal level, because they live the area. It's their life problem, they know. They may not be able to articulate it in the data set and so on, but they know it. They also know through the experience the interlinkages of, say, she was speaking about drinking water with health, she spoke. With, say again, sanitation, green and clean, very wide canvas, how intersectoral linkages. See, this is how local level planning takes place. The ground rule is keep it as simple as possible. You are all working in different NGOs, most of you, are all adept in various participatory research methods. What is the characteristics of these methods? They are made so simple that others do understand and it is easy for them to participate. Now, this is my objection to index-based localizing of SDG. I like it the way Sunil Kumar presented in the morning. Okay, there are 9 themes. Leave it to them to decide which is their priority. They know. In fact, a student of mine, doctoral student of mine, did her work on local development index. Now that being Kerala, with more robust secondary data at Panchayat level, they say, and in the People's Plan campaign, we had carried out a secondary data collection campaign, going to each office, filling up the data set that can be collected from there and so on. Despite that, when this index was made, we had to leave out half the panchayats. Only 600 panchayats we managed to make index. Of course, this was not about making index, but relating it to the other capacities, the performance of the panchayats. Okay, that was the thesis above. So this is given the nature of data at local level.
Okay, all data is created, generated at local level, then aggregated at district and state level. But higher the aggregation, the rule of averages work out here. Some public health PHC would be bad data, understating it, somebody overstating it. So aggregation at district level, state level, most robust is national level. As you come down to state, there is a limitation. As you go down to state, district, there is even greater limitation. When you go down to Panchayat, mind you, the data is very suspect. Yeah. So we should look at the planning process from the perspective of the participants. Their capabilities, here Kannada was saying, we were new to it. Every 5-year results in a new set of people coming in. You don't know how the departments are going to collaborate with them, cooperate with them, how the capacity making creation at the panchayat level is going on and so on. So the minimum conditions for a planning process to achieve is very difficult. Therefore, my play out would be, the presentations made here would underline the need to keep this process as simple as possible. See. We would require this at national level to have indices to assess performance and so on. Maybe have it at district level, up to district level. Beyond that, don't go into this localizing SDG, data-wise, data point. Just think about it, 600 data points to be assessed at the local level, etc. There is something called data fatigue. So, it's very important to localize SDG at the local level. For the simple fact, they are intimately related to the lives of people. And that's where action will take place. So that's a very right approach. But don't put index before that. Thank you. So I don't think I need to summarize any further. So I'm going to close this session. I think we heard stories, grounds up. We heard achievements of panchayats. Professor Thomas Isaac rightly pointed out the needs emerge from felt needs, the priorities, etc. And the place for data at the local level, how it is positioned, whether it can be visualized, what needs to be done, we have to think. There are a lot of reflection points. So thank you so much, Professor Isaac. Thank you very much, everyone. We can thank you to all esteemed panel speakers and moderator for completion of this session very successfully. So with this, on behalf of Samagam, we would like to felicitate our panel speakers and moderator. For that, I would like to invite Sahana to do the felicitation. Thank you, Sahana.